Good morning, students. In the last class, we were studying the supply function, in which we have studied the supply function is of two types, that is individual supply function and market supply function. Individual supply function, in which it expresses simply the relationship between the supply and the others factor which affecting the supply of a commodity by an individual seller. Okay, so in this we have studied the mm, different factors which affecting the supply. We have already studied the price of the commodity, technological changes, input price changes, and changes in taxation and subsidy policy. What will impact on the supply curve when there is factors affecting the supply? Okay, the curve is shifted to rightward or the curve is shifted to the leftward. Okay, so all these four factor affecting we have already studied. So in today's class we are going to study the next factor which affecting the supply. It is the change in the price of the other goods. So let's start. Supply of a good is also influenced by the price of the other goods in the market. Since resources available with the producer can be put to alternative uses, the producer will use the given resources to produce the good which is highly priced and thus make it more profitable for him to produce. Therefore, a producer shifts the resources from production to the commodity in question to production of other goods whose prices are rising and vice versa. Okay. So supply of a commodity or supply of a good is influenced by the price of the other goods in the market. Okay. किसी भी commodity की price वो किसके थ्रू influenced होती है? Price of the अदर गुड्स की क्या प्राइस है, इसी के अकॉर्डिंग किसी भी गुड की सप्लाई भी अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड होती है. सिंस रिसोर्सेज अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस. सो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं विद द प्रोड्यूसर विल ऑलवेज take the resources in the alternative uses. Means basically opportunity cost means प्रोड्यूसर ये चाहता है कि कहाँ वो अल्टरनेटिव यूज़ करे सो दैट जो उसका प्रॉफिट हो वो क्या हो, ज़्यादा हो, और उसका कॉस्ट जो वो इनकर कर रहा है वो दैट विल बी टू मच लेस. ओके, सो द प्रोड्यूसर विल यूज़ द गिवन रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस द गुड विच इज़ हाईली प्राइज्ड, thus make it more profitable for him to produce. Okay, so प्रोड्यूसर क्या करता है, उन सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करता है गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें क्या विच इज़ हाईली प्राइज्ड, जो ज़्यादा हाईली प्राइज्ड होंगे, विच मीन्स जब प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी. तो वो ऐसे कमोडिटी को प्रोड्यूस करना चाहता है विच इज़ हाईली प्राइज्ड सो दैट ही विल अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. Therefore, a producer shifts the resources from production of the commodity in question to the production of other goods. Okay, so अभी क्या करता है प्रोड्यूसर, अपने जो भी रिसोर्सेज को प्रीवियसली जिस गुड पे लगा रहा था, अब उससे रिसोर्सेज को वो शिफ्ट कर लेता है इन दोज बेसिकली गुड्स हुज प्राइस आर राइजिंग, कि जिसकी प्राइस क्या हो रही है, वो राइज़ कर रही है. बिकॉज अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस राइज़ करेगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी. जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर को क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा. इसलिए प्रोड्यूसर क्या करता है कि अपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, वो वहाँ से उस रिसोर्सेज को शिफ्ट करके दूसरे ऐसे प्रोडक्ट पे लगाता है जहाँ पे जिस गुड की प्राइस ज़्यादा होगी और फिर प्रोड्यूसर को क्या होगा, प्रॉफिट होगा. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन इज हियर दैट इफ द प्राइस ऑफ द अदर गुड विच मीन्स टी फॉल्स, इट्स सप्लाई फॉल्स. ओके, it make the production of given commodity profitable and supply of the commodity rises, and the supply curve of a coffee shift to the right from SS to S1. Okay, if the price of the other good, here we have taken the other good is tea,
and the supplier is producing the commodity coffee, but he is shifting his or her resources to the next. So if the price of the other good, कि अगर कोई भी अदर गुड जो यहाँ पे टी ले रखा है सप्लायर ने, अगर उसकी प्राइस क्या हो रही है, राइज फॉल कर रही है, तो प्राइस के फॉल होने का मतलब क्या है कि उसकी सप्लाई भी फॉल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर को इस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इट मेक द प्रोडक्शन ऑफ गिवन कमोडिटी प्रॉफिटेबल। फिर इससे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन जो भी वो गिवन कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, इन दैट कंडीशन ही विल फेसेस द मोर प्रॉफिट एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी दैट मीन्स कॉफ़ी राइज कर रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वो वहाँ से अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर दिया है कॉफ़ी पे। अब कॉफ़ी पे उसको क्या हो रहा है, प्राइस उसकी राइज कर रही है। In that case, supply of also the coffee will rises, and then supply curve for the coffee is shifted to SS2 S1 S1. Okay, so here you can take the one schedule, that is price is constant 10 10, and the previously the quantity supplied is 4, but the resources is shifted to the another commodity, another coffee, so that it will increases up to 8. That's why the curve of the coffee is shifted to the right word to S1 S1, from SS to S1 S1. Here we will take price and here quantity supplied. Okay, now the next one is, if the price of the other good, for example tea, its supply would rises as profit margin rises, and supply of the commodity in question coffee falls, and the supply curve of a coffee shift to the left from SS to S1 S1. ओके, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अदर गुड को यहाँ पे हम लोग टी ले रहे हैं, उसकी जो प्राइस है वो क्या हो रही है, राइज कर रही है। अगर प्राइस राइज होगा तो सप्लाई विल ऑल्सो राइजेज, सप्लाई भी ज़्यादा होगा। इन दैट केस प्रोड्यूसर को क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, सप्लाई क्या होगी, अगर इसको यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो सप्लायर क्या करेगा, टी को ही ज़्यादा सप्लाई करेगा, और कॉफ़ी का प्रोडक्शन और कॉफ़ी की सप्लाई वो कम कर देगा, बिकॉज प्रॉफिट उसको कहाँ पे हो रहा है, टी पे हो रहा है। तो टी का प्रोडक्शन वो ज़्यादा करेगा, कॉफ़ी का प्रोडक्शन वो कम कर देगा। जब कॉफ़ी का प्रोडक्शन कम कर देगा तो उसकी सप्लाई भी कम होगी। जब सप्लाई कम होगी देन द कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड। सो सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल है कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ द अदर रिलेटेड गुड्स। सो टी एंड कॉफ़ी इज़, it is substitute good or complementary goods? It is substitute good. Okay, so we are talking here the substitute goods. So अगर प्राइस किसी भी आउटपुट की, अगर टी की प्राइस राइज कर रही है तो विच मीन्स सप्लाई ऑफ द टी विल ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड द सप्लाई ऑफ द अदर गुड विच मीन कॉफ़ी डिक्लाइन करेगी, क्योंकि अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा जहाँ पे प्राइस ज़्यादा होगी, सो दैट उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। और कॉफ़ी का प्रोडक्शन वो कम करेगा, जब कॉफ़ी का प्रोडक्शन कम करेगा तो उसकी सप्लाई भी कम होगी, और जब सप्लाई कम होगी तो कर्व क्या होगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो यू कैन सी हियर इट इज़ द शेड्यूल 10-10 and the quantity supplied is from 8 to 4, it is declining. Here we will take the price of the coffee and quantity of a coffee. So price and quantity, it will be the price and the SS, then supply of the coffee will decreases, so it will shift to the left word. Okay, so it is the case of the when the supply curve is shifted leftward. Okay, now the next one is, if price of a complementary goods, okay, so if the price of the complementary
Here we are taking the car and petrol. If the price of the complementary good car rises, supply of car also rises, supply of the commodity petrol also rises as profit margin. So the supply curve of petrol shift to the right from SS to S1 S1. Okay, अगर प्राइस किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की, कार की प्राइस राइज कर रही है, तो सप्लायर के लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल कंडीशन होगा। तो कार की सप्लाई भी ज़्यादा होगी। जब कार की सप्लाई ज़्यादा होगी तो पेट्रोल की भी तो नीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब कार जब चलेगी तो वो पानी से तो चलेगी नहीं। तो इस कंडीशन में अगर प्राइस कार की ज़्यादा होगी तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई भी ज़्यादा करेगा, और लोग जब कार को परचेज़ करेंगे, इन दैट कंडीशन द डिमांड ऑफ पेट्रोल विल ऑल्सो राइजेस, देन प्रॉफिट मार्जिन राइजेस, प्रॉफिट भी सेलर का इंक्रीज़ करेगा। जब सेलर का इंक्रीज़ करेगा, सप्लाई इंक्रीज़ करेगी, इन दैट केस सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड। ओके, इट्स सो सिंपल। ओके, एक के इंक्रीज़ होने के, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे के भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगा, प्राइस के साथ दूसरे की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, जब इंक्रीज़ हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, देन कर्व विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड। ओके, here price and quantity, it is the price SS, then it will shift it to the right word S1 S1. Okay, now the next one is, if the price of the commodity car falls, अगर प्राइस फॉल कर जाएगी कार की, तो अगर हम लोग सप्लायर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो सप्लायर क्या और ज़्यादा सप्लाई करेगा उन कार की? नहीं, क्योंकि इन दैट कंडीशन उसको लॉस होगा। ठीक, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, सप्लाई ऑल्सो फॉल्स, एंड द सप्लाई ऑफ कमोडिटी ऑल्सो फॉल्स। अब कोई पेट्रोल तो घर पे रखने के लिए लेगा नहीं ना। जब कार की प्राइस अगर क्या है कि फॉल कर गई है तो सप्लाई उसकी क्या है, सप्लायर उसकी सप्लाई भी कम कर देगा, और उसकी जो जब मार्केट में होगा ही नहीं तो नोबडी इज़ एबल टू परचेज द कार, सो द डिमांड फॉर और द सप्लाई ऑफ द पेट्रोल विल ऑल्सो डिक्रीजेस, प्रॉफिट of the supplier will also decreases, and when the profit decreases the curve is shifted to the leftward. Okay, here it is price and quantity, it will shift it to the leftward. Okay, yes. Now the next one is market supply function. Okay, till now we were studying the individual supply function, in which we have studied the price of the commodity, technological changes, price of the inputs, when the taxation and subsidy policy of the government, and the price of the other goods. And in the market supply function, market supply function simply means it is the functional relationship between the market supply and factors affecting the market supply of the commodity. यहाँ पे हम लोग किसकी स्टडी करते हैं कि फंक्शनल रिलेशन किसके बीच में, मार्केट में मार्केट सप्लाई और जो मार्केट सप्लाई को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इनके बीच में हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं। सो मार्केट सप्लाई फंक्शन इज़ द QX और SX मीन्स क्वांटिटी of the commodity or supply of the commodity is the functional relationship between of Px, T, P1, Gp, P0 and N. All these we have already discussed in the individual supply function. Only N, that is number of firms, is left out. So in this market supply function we will study number of firms. So change in the number of firms or competition. An increase in the number of firms, the if the number of firm will increases,
it ultimately more and more competition will exist. ठीक है. अगर क्या होता है इन केस कि नंबर ऑफ फर्म्स, अगर इकॉनमी में क्या है, मार्केट में बस 10 फर्म्स हैं, ओके, बट फर्म्स क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स क्या होंगी, वो इंक्रीज़ कर जाएंगी. फॉर एग्जांपल इट बिकम्स 15. सो द कंपटीशन अब कितने फर्म, पहले कंपटीशन कितने में था, बस 10 में था, अब कंपटीशन क्या है, 15 फर्म्स में है. सो दैट द कंपटीशन विल इंक्रीज मोर एंड मोर. इफ द कंपटीशन विल इंक्रीज more and more, the supply curve or the supply will shift to the rightward. Okay, so the supply curve shift to the right from SS to S1 S1. Okay, here it is, and it will shift to the rightward, where price and quantity from SS to S1 S1. Okay, and next one is when there is decrease in the number of firms. If number of firms prevail in the market is 10 and it decrease up to 8, so number of firms which is existing in the market declining, so the competition also among the firm is decline. If the competition decline, then the supply curve of the commodity will shift it to the leftward. Okay, अब जब क्या होगा, लेस कंपटीशन होगा, तो मार्केट सप्लाई कर्व भी क्या होगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. सो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, हियर प्राइस वी विल टेक, देन it is SS supply curve, and if the less competition prevail in the market, so that curve will shift to the leftward, S1 S1. Okay, so it is all about your individual supply function and market supply function. Now the next topic is change in quantity supplied and change in supply. Change in quantity supplied simply means movement along the same supply curve. Okay, so there will be no change in the, there will be no shifting of the supply curve from leftward or rightward. The all the changes occurs on the same supply curve. ठीक है, जो भी changes occur होंगे वो क्या होंगे, same supply curve पे होंगे. कोई भी curve का shift नहीं होगा कि वो rightward और leftward वो shift नहीं होगा. So the when quantity supplied of a commodity changes due to change in its own price, assuming other things being equal, it is known as change in quantity supplied. Okay, it is represented by the movement along the same supply curve. Okay, when the quantity supplied of a commodity is change ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस. ठीक है, जो भी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है वो चेंज कैसे हो रही है, ओनली चेंज इन दी प्राइस ऑफ दी दैट कमोडिटी, की उस कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज हो रही है. और हम अदर्स जितने भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, टेक्नोलॉजिकल चेंज, प्राइस ऑफ द अदर इनपुट्स, नंबर ऑफ फर्म्स, हियर वी विल टेक ऑल द अदर फैक्टर एज कांस्टेंट. देयर विल बी नो चेंज इन दी अदर्स फैक्टर, की अदर फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं होगा. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मीन्स कि कोई भी चेंजेस क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है उसमें चेंज जो भी हो रहा है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. उस कमोडिटी की प्राइस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है. एंड वी हैव टेकन द अदर्स फैक्टर्स रिमेनिंग द कांस्टेंट. देयर विल बी नो चेंज इन द अदर्स फैक्टर. इट इज़ नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व. मीन्स देयर इज movement will be in the same supply curve. The supply curve will not shift to the rightward or leftward. Okay, so the changes will occur on the same supply curve. So it is of two types. First one is extension of supply, second one is contraction of supply. We will already studied in the case of demand, extension of demand and
contraction of demand. So in the supply we will study the extension of supply and the contraction of supply. Okay, now what is extension of supply? When other things being equal, quantity supplied of a commodity rises due to rise in its price. It is termed as extension of supply. For example, supply of a sugar rises due to rise in its price and other things being equal. Yes, here we have taken that other factors or other things being constant, or there will be no change in the other factor, so that quantity supply of a commodity rises due to rise in its price. कि प्राइस के राइज होने की वजह से क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. इफ़ द प्राइस बिकम 10 to 20, quantity supplied also increase to 8 to 12. Okay, because of change in the price, because of the rise in the prices, the quantity supplied is also increases, and we have taken others factor remaining the constant. It is called the extension of supply. Okay, for example, the supply of sugar rises due to rise in its price. कि शुगर की प्राइस राइज हो गई, इन दैट केस सप्लाई भी शुगर की राइज हो गई, एंड वी हैव टेकन दी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. ओके, सो द नेक्स्ट schedule is given for the extension of supply is price and quantity. The price, if the price of the any commodity increases, so the supply quantity supplied of the those commodity will be also increases. So the price is increases from 4 to 8. When the price of the commodity is 4, the quantity supplied is 20. When the price of the commodity becomes 8, the quantity supplied is 40. Okay, so there is positive relation between the price and quantity because both are increasing, and we have taken the others factor remaining the constant. Okay, so we will put all these value on the diagram. Okay, here we will take price and quantity. Price is 2, 4, 6, 8, and here 10, 20, 30 and 40. When the price is 4, quantity supplied is 20. Okay, we got the first point. When the price is 8, quantity supplied is 40. Okay, this is SS curve. Sorry, yes. Okay, now you see, referring to table 9.5, 9.15 and figure 9.17, it is clear that when the price rises from 4 to 8 unit, if the price rises from 4 to 8 unit, quantity supplied rises from 20 to 40 unit. Quantity supplied, it is also increases from 20 to 40 unit. It is shown by the movement from lower point A to upper point B on the same supply curve, which shows that the curve is moving on the same supply curve, which means shown by the movement from lower point A, the curve is moving from, first of all it was, okay, let you see, firstly the curve is on this point, but if the price rises and quantity rises, then it will shift to the this point. Okay, so it is shown here from point A to point B, from lower point to upper point. So it is called the extension of supply. Okay, what is extension of supply? Extension of supply simply means other things remaining or being equal when the quantity supplied of a commodity is rises due to rise in prices. कि other things जितने others factor हैं, what are the different other factors? The
technological changes, price of the other related goods, price of the inputs, number of firms, taxation and subsidy policy of the government. We have taken all these factors as constant. When the quantity supplied is increasing only because of increase in the price, it is called extension of supply. मीन्स अदर्स जितने भी फैक्टर्स हैं हम उनको क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. ठीक है, उनको हम एज अ कांस्टेंट रखेंगे और जो भी चेंजेस अकर होंगे वो किस में होंगे, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में. जब प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ हो रही है. सो इट इज़ कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ supply. And the change in quantity demanded, which means there is change in the movement in the same supply curve. The supply curve will not shift to the leftward or the rightward. So in this diagram we will see that we will see that the first point on the A, and when there is extension, so it will shift to the B. It shows that there is extension of supply. Supply is increasing only because of price is increasing. Okay. Now the next one is contraction of supply. When other thing being equal, quantity supplied of a commodity falls due to fall in its price, it is termed as contraction of supply. For example, supply of sugar falls due to fall in its price and other things being equal. It is just opposite to the extension of supply. Here we will also take the other things remaining the constant. Quantity supplied of a commodity falls ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस. ठीक है, अदर फैक्टर्स जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे. क्वांटिटी सप्लाई जो हो रही है किसी भी कमोडिटी की, कि वो कितना सप्लाई हो रहा है, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. कि अगर प्राइस क्या है उस कमोडिटी की फॉल कर जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी फॉल कर जाएगी. तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में सिंपल क्या होता है कि क्वांटिटी जो भी है सप्लाई करने की वो फॉल कर जाती है ओनली बिकॉज ऑफ जो प्राइस है उस कमोडिटी की वो फॉल कर गई है. सो इट इज़ कॉल्ड दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इन विच सप्लाई ऑफ शुगर फॉल्स ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस. ओके, द एग्जाम्पल ऑफ दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज़ कि जो भी सप्लाई है शुगर की वो फॉल कर जा रही है. क्यों फॉल कर जा रही है, बिकॉज उसकी प्राइस क्या हो गई है, फॉल कर गई है. जब प्राइस फॉल कर गई है तो सप्लायर को क्या होगा, प्रॉफिट भी बहुत लेस मार्जिन में होगा. तो सप्लायर क्या करेगा, उसको सप्लाई ही नहीं करेगा. ओके, एज अ वो बफर स्टॉक, एज अ स्टोरेज वो रख लेगा कि इन फ्यूचर जब उसकी प्राइस इंक्रीज़ करेगी, इन दैट केस ही विल सप्लाई ऑल दी शुगर. ओके, other things being equal, we will take the others factor as constant. So here it is the schedule that when the price of the commodity is 8, so quantity supplied is 40. When the price is declined up to the 4, so quantity also declining to 20. Okay, so we will plot all these value on the diagram. Price, quantity, 0, 4, 8, 20, 40. Okay, it is 4. Yes, at price 8, when price 8, quantity supplied is 40. Quantity supplied is 40. When price is 4, quantity supplied is 20. Okay, this it is supply curve, and the point is A and the point is B. Okay, so the curve is moving on the same supply curve. Okay, so it will from point A to B, which means when the price is 8 and quantity supplied is 40, but now the curve is moving on the same supply curve and it is moving from upper point means A, to lower point B. So it is called the contraction of supply, which means
the curve is moving on the same supply curve, the curve will not shift to the leftward or the rightward. It is called the change in quantity demanded. Okay, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class.